we are going to discuss the question answer of the Ballad of Father Gilligan. The first question is, why was Father Gilligan weary? Was he only tired physically or also exhausted mentally? Justified your answer with examples from the poem. तो कौन कुआ है फादर गिलिगन कहीं वरिड थे वेरी माने वरिड ये वाज ही फिजिकली टायर्ड से कौन खाली फिजिकली टायर्ड थे ना मेंटली भी से बहुत स्ट्रेस रे थिले तो आंसर होची फादर गिलिगन वाज वेरी ऑफ गोइंग टू द बेड साइड ऑफ द सिक एंड डाइंग अमॉन्ग हिज पैरिशनर्स and offering him the spiritual comfort round the clock. He was only physically tired. The lines, the old priest Gilligan was weary night and day justifies this. तो आमने कौन आमने होची फादर गिलिगन वरिड थिले कहीं से बेड साइड अटेंड करिया पे जाउले माने बेड साइड माने लोक माने जो बेड रिडन हो जाती सिक हैला बेले से तांको साइड रे जाएंगे प्रेयर्स पढ़ुथिले आउ से लोक मैंने पैरिशनर्स थे पैरिशनर्स माने होचंती जो डेली चर्च गोइंग पर्सन्स मानक भितरु से माने थिले तो सी बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाइथिले दिन राति तांको मानकु सर्व करी सो सी फिजिकली बहुत टायर्ड हो जाइथिले ही सिक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड व्हाट टाइप ऑफ मैन डज दिस प्रूव हिम टू बी तो सी कहीं ठाकुर ठारू क्षमा मागिले आउ क्षमा मागिया द्वारा आम तक नेचर विषय कौन जानिया पाइलु ही साउट्स फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड टू स्टेटिंग दैट ही एंजॉयड नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर अटेंडिंग द सिक हु डाई एंड डाई he had spoken out these words out of physical exhaustion not because he did not want to work his spirit was willing to work but his flesh was weak. This proved him to be the most dutiful and religious man. तो आम कौन जानिया पाइलु सी ठाकुर ठारू क्षमा ये मागुले कहीं सी ग्रीव कले कि पाखरे ना पीस अच्छी ना जॉय अच्छी ना रेस्ट अच्छी से खाली काम कर चलती हेले ए कथा तांकर सोल कहू नथिला ए कथा तांको बॉडी कहूथिला कहीं बॉडी कहूथिला कहीं से बॉडी को रेस्ट मिलू नथिला तांको सोल काम करिया पे चाहूथिला लोक माननको बेड साइड अटेंड करिकी तांको माननको पैरिशनर्स को रिलीजियस कंफर्ट दबा पे चाहूथिले आउ एथरो आमे जानिया पे पाइलु से जने ड्यूटीफुल और रिलीजियस मैन बेलिकी. नेक्स्ट क्वेश्चन होची हाउ वाज द नाइट पीसफुल एंड क्वाइट और टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस. ब्रिंग आउट एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर. तो ये कौन पचराई कि से नाइटा केमती थिला पीसफुल और शांतशिष्ट थिला ना डिस्टर्बिंग और रेस्टलेस थिला एक्सप्रेशन किछि त नोटिफाई करिया पे कहिछि फ्रॉम द पोएम आंसर को सपोर्ट करिया पे. द नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट द एक्सप्रेशन एज पीप स्लोली शेड विस्पर एंड स्पैरोज चिप सपोर्ट्स आ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाई हैज़ द नाइट बीन डिस्क्राइब्ड सो. तो एमती कहीं नाइट को डिस्क्राइब करा ना द नाइट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड सो टू ब्रिंग होम द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फादर गिलिगन व्हेन अवेक एंड व्हेन अस्लीप. तो एमती ये करा कि डिफरेंस आनिया कि फादर गिलिगन जितेबाला अवेक थिले आउ जितेबाला अस्लीप हो जाइले माने जितेबाला सोई पड़ते. इन अदर वर्ड्स बीइंग इमोशनली एंड फिजिकली वर्न आउट द प्रिस्ट नीड डीप स्लम्बर एट नाइट. तो आर यथार्थ कौन रियल मीनिंग होची बीइंग इमोशनल माने इमोशनली और फिजिकली सी एते थकी जाइथिले जे तांको निजको सतरे गोटे डीप स्लम्बर माने डीप स्लीप दरकार होथिला. What was the reaction of Father Gilligan when he woke up from his deep sleep? State why he felt so. When he woke up from his deep sleep, he felt terribly sad because the sick man he had to attend would be no more. तो तांको कौन लगी सी जो शोक उठिले सी बहुत दुखित हो जाते कहीं दुखित हो जाते ना सी जो डका होता से सिकमैन को अटेंड करने से अटेंड करने जापार ना आउ से भावुले से सिकमैन मरी जाए. द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड. सो the expression he rode now as he never rode means Peter Gilligan's fastest ride ever. ता माने कौन से सोईकी उठिला परे निज घोड़ा को नेकी एमिति दौड़थिले से सिकमैन पाखु जेंति से आउ ता पूर्वरु केबे भी हेले भी घोड़ा चलै नथिले.
Find the expression that shows Father Gilligan concern for the peoples under his care. तो से एक्सप्रेशन को देखा जोटा प्रूफ करे कि फादर गिलिगन निज माने लोक मानक पई पैरिशनर्स मानक पई केयर करन. द एक्सप्रेशन दैट शोज फादर कंसर्न फॉर द पीपल अंडर हिज केयर आर and rode with little care. He rode now as he never rode. And is the poor man dead? He cried, and in grief swayed to and fro. तो कौन जमती कि लाइन्स लाइक एंड रोड विथ लिटिल केयर से किसी न ध्यान दे कि बहुत जोर घोड़ा दौड़े से सिक मैन कि ही रोड एज ही नेवर रोड. सी एते जोर घोड़ा चलाउले एज इफ कि सी केबे आगु चले ही नांती एते स्पीड रे से चलाउले. एंड इज द पुअर मैन डेड? सी यही कथा चिंता करिकी जेतेबेले एपट सेपट चलिया पे लागिले कांदिले ग्रीफ कले तो सेटा एक्सप्रेस करोची कि सी निज पैरिशनर्स मानकर केते जत्न नियंती. द सिक मैन वाइफ से फादर यू केम अगेन? द सिक मैन वाइफ सेड फादर यू केम अगेन because she had seen him come to her husband who died soon after he left the house. तो एक्चुअली सीन कौन होता ना जेतबले फादर गिलिगन जाइकी से सिकमैन वाइफ रो दुआर मुहरे पहुँचे थे. सिकमैन रो वाइफ देखिकी तांको आश्चर्य होगी पचारते आपण आउ थे आसी सी एमती कहीं कहीं ना फादर गिलिगन एक्चुअली रे तांको घर को आसी आउ से जीवा परे ही तांको हस्बैंड कर डेथ हो सारी. Who came to the sick man before his death? Why? One of the God's great angel came to the sick man before his death. He had came in the guise of Peter Gilligan. तो actually से sick man रो bedside को attend करिया पे किए आसी थिले ना जने angel आस्थिले in the guise of Father Gilligan. In the guise माने छद्म बेसो नहीं कि Father Gilligan करो से sick man बेडसाइड को अटेंड करने जड़े एंजल आसते जहाँ को गॉड पठे फादर गिलिगन को बेस देकी. मेड फादर गिलिगन नील एंड प्रे दैट गॉड हैड हेल्प्ड हिम व्हेन ही नीडेड रेस्ट मोस्ट. मेड फादर गिलिगन नील एंड प्रे. तो फादर गिलिगन जितेबाला अधिक रेस्ट चाहूले से गॉड तांको रेस्ट देकी निजे तांको फादर गिलिगन को काम करदेले बेली फादर गिलिगन बहुत ही खुशी है कि आंठे की प्रे करिया लगिले. वेयर हिज वर्ड्स टू द ग्रैटिट्यूड ऑफ गॉड. तो फादर गिलिगन्स को वर्ड्स कौन थिला टुवर्ड्स द ग्रैटिट्यूड ऑफ गॉड? द वर्ड्स ऑफ फादर गिलिगन टुवर्ड्स द ग्रैटिट्यूड ऑफ गॉड वेयर that he who takes care of all the things, the vast universe, never forgot to relieve a poor priest like him his dire exhaustion. तो से कौन कही कि गॉड जी पूरा यूनिवर्स रो केयर नौचंती जी स्काय बनई जी स्टार्स बनई सीए ए भलिया लिटिल प्रिस्ट उपरे निज दया देखई थिले. देयर इज एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन अ हेवनली क्रिएचर एंड बॉडी, angels or planets and their tireless movements with an insignificant person in 43 on earth and his inaction, sleep, not being able to take care of a person in time. Discuss the comparison. So एठी गोटे implicit comparison है कौन ना heavenly creature और bodies भितर. This comparison speaks the volumes of God's goodness to all. तो यही कंपैरिजन भितर आमे गॉड कर ग्रैटिट्यूड जानिया पई पाइले, गॉड कर मेन रोल जानिया पई पाइले. ही मेंटेन्स अ ग्रेट बैलेंस इन हिज क्रिएशन. सी निज क्रिएशन भितर गोटे ग्रेट बैलेंस सृष्टि करचंती. द हेल्प ही बेस्टाउड ऑन पीटर गिलिगन इज अ केस इन दिस पॉइंट. तो सी जेंती पीटर गिलिगन को हेल्प कले निज काम रे तांको आशीर्वाद देले पॉइंट ऑफ फादर गिलिगन डू यू एडमायर. तो फादर गिलिगन करो कौ सब क्वालिटीज तुम मैंने एडमायर करुच. वी एडमायर फादर गिलिगन कीन सेंस ऑफ ड्यूटी. तांकर ड्यूटीफुलनेस आम एडमायर करुच. डीप कंसर्न अबाउट द सिक्स माने सी निज पैरिशनर्स को ऊपर केते कंसर्न केते कॉन्सेंट्रेटेडली से माने सर्व करुचंती फादर गिलिगन निज सिक पीपल्स मानू. अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू गॉड माने सी केते निस्वार्थ भाव में गॉड को समर्पण कर. स्टैंजा हैज 4 लाइन्स. इन स्टैंजा 1 डे इज द फर्स्ट लाइन rhymes while lay of the 4th line makes the rhyme scheme A B C D. Find out
whether all the stanza have the same rhyme scheme. तो फर्स्ट लाइन रे जंती डे होची राइम स्कीम सेंती फोर्थ लाइन रे ले होची राइम स्कीम आ ए बी सी डी करके राइमिंग स्कीम टाको बना हेची. सो सबु स्टांजा रे सेम राइमिंग स्कीम अच्छी. सो एटी किस्टा एडिशनल क्वेश्चन रे एमसीक्यू अच्छी. यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल एंड एनी डाउट रिगार्डिंग एमसीक्यू यू मे कमेंट इट.